Hello everyone. Welcome. The topic for today is features of Constitution. Let's move to our first question. In essence, what does due process of law mean? Due process of law का मतलब क्या होता है? Is the law fair and not arbitrary? Let's see all the options. The principle of natural justice, procedure established by law, fair application of law, equality before law. Equality before law means, is everybody equal in front of law? Fair application of law, the law that is already existing, is it applied fairly? The procedure established by law, procedure that has been followed in law making, is it fair? मान लीजिए कि सुप्रीम पार्लियामेंट को किसी भी लॉ को बनाने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तो क्या वो 2/3 मेजॉरिटी का क्राइटेरिया फॉलो हुआ है? बेसिकली इतना ही मतलब होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का. लास्ट ऑप्शन दैट इज लेफ्ट, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दिस इज द आंसर, बिकॉज ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि आप लॉ बनाएंगे तो उसको फेयर रखने की कोशिश करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement best reflects the chief purpose of Constitution? ये सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के 3 से 4 बार यूपीएससी पूछ चुकी है. It determines the objective for the making of necessary law. It enables the creation of political offices and the government. ये तो एक पब्लिक ऑर्डर से भी किया जा सकता है. It defines and limits the power of the government. कुछ सही सा लग रहा है. इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. इसके लिए और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. इसका आंसर होगा इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी 2 से 3 बार पूछ चुकी है और आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बिल्कुल सेम बात है अगर वो आपको कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates it is federal in character? Independence of judiciary? Yes. Union legislature has elected representative from constituent units? ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात हो रही है. Next option is the union cabinet can have elected representatives from regional parties? ये भी नहीं. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ? नो. इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. लेट्स सी द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 2 गवर्नमेंट, डिविजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, bicameralism. Unitary features are strong central, single constitution, and flexibility of constitution. Let's move to the next question. Which one of the following is a characteristic feature of Indian federalism? Indian federalism is not a result of an agreement by states. No state has right to secede from the federation. We all have read this in Lakshmikant. So the answer is the federating units consented to form a union. It is not a characteristic. Residuary powers vest with the center? Yes. Single citizenship? Yes. An extension of union and concurrent risk? Yes. Let's move to the next question. Which one of the following is related to the doctrine of separation of power? Doctrine of separation of power. Separation of power is basically between legislature, executive and judiciary. ये सब एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं. चेक एंड बैलेंस 2 तरीके का होता है, इंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस. लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसके बेसिस पे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट को वो सही नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. ऐसे ही लोकसभा से बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है. परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव लॉ बनाने में हेल्प करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं. जुडिशरी, लोकल और हायर जुडिशरी.
बेसिकली लोअर और हायर जुडिशरी। ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। सो द आंसर इज legislature, executive and judiciary. Let's move to another question. Which one of the following provisions of Constitution of India was not adopted from British Constitution? First past the post system, it was adopted. Directive principles of state policy, no. Irish Constitution से adopt किया था. Law making procedure, yes. Parliamentary form of government, yes. So the answer is directive principles of state policy, DPSP. ये टेबल एक मैंने इंसर्ट किया है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. Yes, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, वहाँ पर पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। बट हमारे यहाँ अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो आर्बिट्ररी इन नेचर है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred by the constitutional bench of the Supreme Court. Yes. Let's see Article 145(3). There should be at least 5 judge bench to hear cases that involve substantial question of law. ये article आपको याद रखना चाहिए. So the answer is both 1 and 2. Next question. Which one of the following is not a function of Constitution of India? Let's see all the options. To ensure participation of good people in politics, to guarantee a set of rights to citizen, to define the power of different organs of the government, to create conditions for a just society. Last के तीनों सही हैं. To ensure participation of good people in politics is not correct. This is something that cannot be defined in words. आप कैसे Constitution कैसे एक स्टेटमेंट दे देगा कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे नहीं हैं? दिस इज समथिंग that cannot be defined and it is the answer. Let's move to another question. Which one of the following is not a feature of Constitution of India? It provides a set of basic rules. Yes. It specifies the power of the government. Yes. It is the supreme law of the land. Yes. It specifies the supremacy of judiciary. No, in India there is no supremacy of judiciary, so this is incorrect and this is the answer. In America, their judiciary is supreme. In Britain, their parliament is supreme. But in India, our constitution is supreme. So, constitution is supreme. And system of checks and balances, I have already explained to you. Let's move to another question. Which one of the following is correct description of Indian federal system? Dual citizenship? No. States have equal representation in the Council of States? No. Persons belonging to all India services can be dismissed or removed by states? No. Unlike in USA, there is no dual system of court. Yes. We have integrated judiciary. Next question. Next question. The federal system of India and USA are different in all the following respects, except states representation in the upper house, yes. Dual citizenship, yes. Dual system of courts, yes. Dual government, no. Dual government हमारी और अमेरिका की सेम है. We also follow the federal structure, they also follow the federal structure. बाकी सारे unitary structures हैं, तो ये हमारा और उनका different है. Next question. Which of the following features were borrowed by Constitution of India from the British Constitution? Rule of law? Yes. Law making procedure? Yes. Parliamentary system? Yes. Independence of judiciary? No. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ब्रिटेन का फीचर नहीं है, अमेरिका का फीचर है. आंसर इज 1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन.
of the following political features which is or are common to India and USA? Residuary powers vested in center, yes. Residuary power vested in state, no. President has the power of pocket veto. Of the following features which are common to India and USA, residuary power vested in the center. India में residuary powers are vested to the center, but in USA they are vested to the state. Residuary power vested to the state, no. President has the power of pocket veto, yes. Upper house has some nominated members, no. Answer is 3 only. Next question. The theory of separation of law is a division of power between legislature, executive and judiciary. Let's see all the options. Center and state government, no. Different branches of government, yes. Polity and economy, no. State and local government, no. So the answer is B. Next question. Which of the following is not a federal structure of the Indian Constitution? Distribution of power between center and state, yes. Entirely written constitution, yes. Single citizenship, no. Independent judiciary, yes. Single citizenship किसका फीचर है? यूनिटरी फीचर है. इसका आंसर होगा सिंगल सिटीजनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is not a basic feature of the Constitution of India? Fundamental rights is a feature. Independence of judiciary is. Federalism is. The unquestioned right of parliament to amend any part of constitution. No, this is incorrect. We all have seen केशव नंदा भारती केस. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से. अगर आपको देखना है तो आप केशव नंदा भारती केस के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं. वैसे आप किसी बुक या किसी अलग लेक्चर से अगर आपको केशव नंदा भारती केस नहीं पता है तो पढ़िएगा, बिकॉज मैंने उसको बहुत छोटे में डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement about the presidential system are correct? The head of the government is also the head of the state. Presidential system में होता है, yes. Parliamentary system में क्या होता है? Head of the government is not the head of the state. PM सिर्फ head of government होता है और president क्या होता है? Head of state, जिसे हम nominal head of state कहते हैं और इसे कहते हैं real head of state. Next is the executive can veto legislative act. No. Answer is 1 only. Next, consider following statement about constitutional government. Constitutional government is a form of limited government. Again, limited government. One where constitution is the basis of public authority. Yes. One where monarch is the formal head of the state. No. Monarchy नहीं होगी. One where there is always universal adult franchise. It is not necessary. Answer is A only. A, 1 and 2 only. Answer is A. Next question. Consider the following statement about democracy. It consists of the formation of a government elected by the people. Yes. In democracy, those currently in power have a fair chance of losing. Yes. Democracy में elections बहुत fair होते हैं. अगर आपके जीतने के चांसेस फेयर हैं तो हारने के चांसेस भी फेयर होंगे. ईच वोट हैज 1 वैल्यू. यस. सो द आंसर इज 1, 2 and 3 बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज द लास्ट क्वेश्चन. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिए और मेरी जो भी मिस्टेक्स हैं मुझे बताइए. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम. थैंक यू सो मच.